Hello everyone, this side Neetu Singh, Assistant Professor of Indraprastha Law College. So in this Indian Judicial System जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई एम गोइंग टू गिव यू अ इंट्रोडक्शन अबाउट रिट. वैसे तो आप इस BLLB के कोर्स में आपने रिट्स पढ़ी होंगी ऑलरेडी इन योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली, एंड सेकेंडली you also studied the writs in your administrative law subject. So this is the third time, so I'm just giving you a overview about this writs. What is writs under the Indian constitution? Okay, so what is exactly writs? So मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज दैट यू हैव आपने एक घर खरीदा है. वो घर आपने खरीदा है, आपको सारी चीज़ें आपके पास हैं, बट उस घर पे कब्जा किसी और का है और आप वहाँ रह नहीं पा रहे हो. यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू स्टे देयर. ओके, सो कॉल्ड वो घर आपका है, उसकी पेमेंट आपने करी है, उसके डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीटेड हैं, बट वहाँ पर रह कोई और रहा है. मीन्स यू डोंट हैव द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट टू लिव इन योर ओन होम. ओके, सो रिट्स भी वैसे ही हैं. रिट्स क्या है? रिट्स बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन है. सो द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव बीन प्रोवाइडेड विद मेनी पावर्स which they exercise to provide justice to the people. One of the most important tools or power which the courts have been provided with by the constitution is the power to issue writs. Okay, so a writ means a command of the court to another person or authority by which such person or authority has to act or abstain from acting in a certain way. So writs are very essential parts of the judicial power of the कोर्ट्स. ओके, आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर बोलते हैं हम आपके फंडामेंटल राइट्स का. द रीजन बिहाइंड दिस आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 को हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आप समझ लो कि एक पर्टिकुलर वर्ड है. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं से स्ट्रांगली कनेक्टेड है दैट इज योर आर्टिकल 32. क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट्स दे दिए, सारी चीज़ें आपको मिल गई. प्रोटेक्शन कहाँ है? 32 में. सो दैट्स वाई 32 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर्टिकल. ओके, सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट विद द पावर टू इशू द रिट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So under Article 32, when any fundamental right of a citizen is violated, that person has the right to directly approach the Supreme Court for the enforcement of his rights, and the court can issue the appropriate writ for enforcing such right. Okay, so the power to issue writs are also provided to the High Courts of India under Article 226. You must remember two articles over here, that is Article 32 Supreme Court and Article 226 for High Courts. Okay, while citizen can approach the Supreme Court only when his fundamental rights is infringed, the citizen also have the right to approach the High Court for the issue of writs in other matters in which the fundamental rights are not violated. Okay, so आपको एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देती हूँ. सामने आपके एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट किया है. सपोज दैट ए इज एन इंडियन सिटीजन हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड. हियर A has the right to either approach the Supreme Court or the High Court for enforcing his right. But if there is a violation of A's right, which is not a fundamental right, then he only has the right to approach the High Court under the Article 226. This is the difference. If जो इस राइट का वॉयलेशन हो रहा है अगर वो फंडामेंटल राइट्स में है तो ए कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, बट इन केस that right is not a fundamental right, then he only has the right to approach the High Court under which Article 226. So a citizen has the right to approach either the Supreme Court or the High Court for issue of writs, but if he chooses to approach any of the court and his suit is dismissed by the court, the citizen cannot file the same suit in other court, because in India the principle of which res judicata is being followed, which means that a second case cannot be filed for the same cause of action. But if a person files the case in the High Court and the High Court does not decide in his favor, he has the right
he has the right to appeal against the decision in the where the higher authority, the Supreme Court of India. Okay, so this is the illustration. Then what is writ exactly, उसका illustration है ये. एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. दिस इज suppose that A files a suit under Article 226 in the High Court and the court accepts his suit. After the proceedings of the case are concluded, the High Court ruled in favor of the defendant. So here A has the right to appeal in the Supreme Court against the decision of the High Court. But if the High Court had rejected the suit filed by the A, then he does not have the right to appeal in the Supreme Court. Okay, I think ये illustrations आपके लिए helpful होंगे. Okay, so in Indian Constitution we have the 5 types of writ which can be issued by the courts, and these are means you have the 5 writs. आपके पास 5 writs हैं जो different conditions में issue की जाती हैं by the courts. First one, that is habeas corpus. Second is mandamus writ. Third is certiorari writ. Fourth is quo warranto, and fifth one is prohibition. So these are 5 writs. हम अपने next lecture में 1 by 1 करके इन writs को cover करेंगे. So what you in this lecture आपको क्या clear हुई चीज़ें, that what is exactly writ. writ की बात आती है तो what is exact articles जो आपको remember होने चाहिए, that is Article 32 and that is Article 226. Okay, and here are the types of the writs. So we have 5 types of writs. These are habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition and certiorari. Okay, so in our next lecture 1 by 1 we will cover these writs. So that's it for this lecture. Thank you so much. We'll continue in our next lecture with one of the writ. Thank you so much.